सो नाउ ये हो गया जब आपका डिमांड कर्व एक लीनियर डिमांड कर्व है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है. Now if the demand curve is a non-linear demand curve, मतलब it is actually a curve. When demand curve is not a straight line, it is actually a curve. तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होगा? लेट अस से अपने को एक डिमांड कर्व दिया है BD which is actually a curve. अभी उस पे से अगर हमको पॉइंट ए पे हमको अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे. लेट अस से द टेंजेंट लाइन इज PQ. तो ED is equal to L upon U is equal to AQ upon AP. टेंजेंट का लोअर सेगमेंट एंड टेंजेंट का अपर सेगमेंट का मेजरमेंट करके विल बी एबल टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? समझा आप लोगों को? Now that completes the method of measuring elasticity of demand. We now go ahead. Factors which determines or influences the elasticity of demand. पहला, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो यहाँ पे अभी आपके सामने जो गुड्स आ गए वो है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इनको हम इकोनॉमिक्स में कौन से गुड्स बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज नेसेसरी गुड्स. अगर फूड का प्राइस बढ़ गया, क्लोथिंग का प्राइस बढ़ गया, विल यू ड्रास्टिकली रिड्यूस योर डिमांड? प्राइस बढ़ गया, जाने दो, नहीं खाते हम लोग. दे आर नेसेसरीज, वी विल डिमांड. प्राइस बढ़ जाएगा फिर भी इसका डिमांड बहुत रेयरली कम होगा. सो प्राइस विल नॉट रेस्पॉन्ड लार्जली, इट इज इनइलास्टिक डिमांड. एक एग्जांपल, fan, sofa set, etc. They are called as comforts. They will always have elastic demand. थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा, डिमांड विल लार्जली चेंज. और तीसरा, एयर कंडीशनर्स, देन ब्रांडेड परफ्यूम्स. दे आर लग्जरीज. आपके स्क्रीन पे जो परफ्यूम का फोटोग्राफ है, इट्स आम्रा ग्रीगिया. 50 ml का 18 to 20,000 रुपीज होता है. ओके, तो लग्जरी गुड्स, दे विल हैव इलास्टिक डिमांड. इसका प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा,
The demand will largely change. Any doubt into that nature of goods? कोई डाउट है उसमें? कोई डाउट है उसमें? Now we go ahead towards the new part, second point, which affects number of substitutes available. We substitute coffee. सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, जितना सब्स्टिट्यूट ज्यादा रहेगा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा. जैसे देखो आपका कोल्ड ड्रिंक्स विल हैव मोर इलास्टिसिटी. सब्स्टिट्यूट्स जितना ज्यादा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा. सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहेगा, इलास्टिसिटी कम रहेगा. नंबर ऑफ यूजेस. आप एक ही चीज मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो. सेवरल यूजेस, then it will have composite demand and it will have elastic demand. मगर अगर नंबर ऑफ यूज सिंगल रहेगा then it will have inelastic demand. पोस्टपोनमेंट. अगर आप अपने प्रोडक्ट के डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो, अभी नहीं खरीदना, बाद में खरीदते, then it will have elastic demand. But if it cannot be postponed, जिन प्रोडक्ट्स के डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, एग्जांपल बताओ मुझको. सीए फाउंडेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप सीए फाउंडेशन का बुक लेने जाओगे, क्या विल यू पोस्टपोन इट? मेडिसिन है, बुक्स है, we cannot postpone their demands. Thus, they will have inelastic demand. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम,
TY-BCom और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। Next, level of price. If the price is too high and if the price is too low, it will be inelastic demand. Too high hai, so basically it will be luxury goods and they are attached with status symbol. बहुत ज्यादा है तो हाँ लाओ, डिमांड हम चेंज नहीं करेंगे. And if it is too low, it will be inelastic demand. But if the price is medium, or we can say moderate, example desktop, phone, bamboo furniture, elastic demand, they will drastically change. Level of income spent. Level of income spent. हम अपना कितना इनकम अपने एक्टिविटीज पे स्पेंड कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. If less proportion we are spending, जैसे न्यूज़पेपर है, सॉल्ट है, पिन्स है, very less portion of our income we spent on all those activities. So this will have inelastic demand. Price कितना भी change हो तो people will demand this. Salt है, newspaper है, pins है, very less amount of income we are spending. But if a big proportion of income is spent, milk, it will have elastic demand. Influences of habits. Habitual goods. जैसे सिगारेट्स है, अल्कोहल है, गुटखा है, जिनको हैबिचुएटेड है, इनके प्राइस कितने भी चेंज होने दो, विल दे चेंज द डिमांड? नो, people will not change the demand. Inelastic demand. Urgency of the product. If the product is very urgent, medicines है, water है, पानी जो urgently जरूरत है, will you look up for price? नहीं, इधर बहुत महंगा पानी है, नहीं चाहिए. Very urgent, inelastic demand. Less urgent, यार अभी नहीं, आराम से लेंगे फुर्सत से, पोस्टपोन हो सकता है ना. Elastic demand. Nature of demand. If the demand is recurring, बार बार लेना है, फूड है, वाटर है, we are going to purchase it again and again, then they will have inelastic demand. But if the demand is non-recurring,
बार बार नहीं लेते, जैसे लैपटॉप्स है, साइकिल्स है, टेलीविजन है, we will not purchase again and again. Then it will have elastic demand. Time period. If the time period is short, अभी जैसे फटाके है दिवाली में, शॉर्ट पीरियड 4-5 दिन के लिए आपको वो स्टॉल्स दिखते हैं. हार्डली यू विल फाइंड मार्केट में 1-2 दुकान ही आपको ऐसा मिलेगा जो पूरा साल भर चलाते ये लोग ये प्रोडक्ट. मैंगोज, वी गेट इट फॉर 3 to 4 months in a year. तो हम लोग उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करके भी परचेज करते हैं. इनइलास्टिक डिमांड. बट इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड, हर टाइम मिलते ही रहता है, इलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पे अपने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ओवर. कोई डाउट है आपको? Now we describe the role, importance or significance of elasticity of demand. Role, importance or significance of elasticity of demand. It is useful for the businessman. For what? For determining or for fixing the price of his product. Elasticity of demand is very much useful for a businessman to fix the price of his product. अभी जैसे किसी प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक है, he can increase the price. He can change the price and make it higher. But if it is having elastic demand, he will charge lower price. Are you understanding this? प्रोड्यूसर को वो कैसे हेल्प करेगा, समझा? फिर it is useful for the government for making taxation policy. Again same, अगर demand for goods is inelastic, it will earn higher profit. Government will charge more tax. And अगर goods का demand elastic है, low profit, government will charge lower tax. बहुत लॉजिकल पार्ट पे मैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स को मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे पे उधर आपके सामने टेबल फॉर्मेट में बना दिया है. आप चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो.